We have a verb, vouloir. So vouloir is my verb to want, right? So the moment I Notepad want चला to गया. convert, Notepad. is it fine now? पीछे ला दो. Vouloir is my verb to want. I want. Vouloir. Speak up. Vulva. Vouloir. So the moment I want to convert vouloir verb RV, so I have to say je veux, Je veux. tu veux, il elle veut, nous voulons, c'est clair, vous voulez, Vous and il elle veulent. voulez. Elle Veulent. vole. Speak up. Je veux, Je veux. tu veux, Tu veux. il elle veulent, sorry, il elle veut, Il, elle veut. nous voulons, Nous voulons. vous voulez, Vous voulez. il elle veulent. Il vole. It is clear to you? I want to go to the market. I want to go to the market. So now are we? देखो अब आपका सेंस आ गया. You asked me कि अगर पार्ले है PARLE तो यूज ही नहीं होगा. But no, यूज होगा. I'm saying I want to go to the market, right? Right? Whenever we have two verbs together in one line, I want is my verb and to go is my verb. Whenever we have two verbs in one sentence, one will conjugate and the second will be full verb, like er. Is it clear to you? Yes. Whenever we have two verbs in one line, so I want is what? Je veux. Je veux. Aller au marché. Yes, je veux aller au marché. Now, it is very important to understand je veux aller, why it is au marché. We have a actually why it is au marché. Oh, to the. You cannot learn to the. We have three type of to the. RV and Anupji and Dimple Madam, we have two type of to the. What is to the? Now, first we'll explain the articles over here. You want to understand to the. In French RV, we have three type of articles. What is le, la, and le? It's clear to you. Le is used for male, la is used for female, and le is used for plural. Is it clear to you? Whenever we are saying to the, एंड चू वी योर आ के ऊपर आपका एक्सेंट आएगा ग्राफ वाला वेल एक्सेंट आएगा आपका ओके आ एंड द कैन बी माय ल आ द कैन बी माय ला आ एंड द कैन बी माय ले clear to you because we have three type of the if I'm saying to the can be with my la la le it can be my male female and plural is it clear Yes. now a plus love never exist in French RP. If I'm saying market is my male noun. Market is my male noun, masculine, right? So if I'm saying to is my and le is my marche. Speak up, marche. If we ever argue, I cannot say a le marche. No, a le marche never exists in French. Marche is your market. Now repeat after me. A plus le is equal to o. If you're female, a plus la, which is exist, which is ala. Allah. Ala is always exist in French. Is Allah. it clear to you? Whenever you have a plus le, that is aux, o. Because a plus le का formula क्या है? O. If you will say to the markets, to the markets, so market is a plural, to le marché, Marché. o marché, to the. Marché. क्योंकि to आ गया है, to the. Say clear are we? Now we have of the and from the, right? So the is equal to of and from. Here are we? Here. Now we have the can be with le
of the can be with la. Is it clear to you? And the can be with my le. So the plus la is equal to du. Say class. The plus la is equal to the la. Very good. And the plus le is equal to they. Yeah. Now I'm saying I want to go to the market. Je veux, are we boulevard verb? Je veux aller Ali, au marché. C'est clair. Sure. Now tell me the next English. I want to go to the market. But market was closed. May. But market was closed. May. But now are we? Was. What is ismr in French? Ismr. We have être verb are we? Être is my verb to ismr. Être is my verb to ismr. Right? Now tell me the formula of être verb. Present tense. Present Je être suis. verb. Je suis. I am. Speak about we. Je suis is to I am. Tu es is to you are. Il, elle, est is to he, she is. Nous sommes is to we are. Vous êtes is to you are. And ils, elles sont is to they are. This is your your être verb. What is the formula of être present tense? Je suis, just tu es, Julie, il, elle, est. Nous sommes, vous êtes, that ils, elles sont. Is it clear to you? Clear? Now speak up, please. Just we speak up, please. Just we, tu es, hmm, nous sommes, vous êtes, that ils, elles sont. il Speak up, please. just A, Hmm. il, elle, Et, et, hmm, nous, sont, vous êtes, vous êtes, ils, elles sont. C'est clair. Yes. Speak up. Je suis is to I am. Je suis. I am. Tu es is to you are. You are. Il, elle, est is to he, she is. Il, Nous sommes is to we are. nous sommes. We are. Vous, vous êtes is to you are. Vous êtes. You are. Ils, elles sont is to they are. Il, sont. They are. Is it clear? For example, if I will say I was. Was. So être is my word. Is MR. Right? What is the formula of parent tense? Just be to a, il, elle, est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Say clair, are we? Yes. Now my was is speak up. J'étais. Speak up. AIS ending. Now formula is my AIS RV. Q, étais. E we have a AQ over here. Q, étais, again ETAIS. J'étais, speak up. J'étais. J'étais. Tu étais. Il, elle était. आगे करना क्या है आपको मैं बताता हूँ very simple. It is just you have to repeat up. Speak up. AIS. Speak up. AIS. Speak up. AIS. AIS. A-I-S, AIT. A-I-I-O, Speak up. IONS. IEZ. And AIENT. It is just whenever you will conjugate I was, you were, he, she was. So speak the formula AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, and AIENT. It is just you have to insert RE है H verb, RE को आप remove कर दोगे और इसके साथ आप ET add on कर दोगे. E के U add on करोगे A पे. word is an R. Yes. If it was one, तो फॉर्मूला हमारा लगेगा वॉस में हमारा ये फॉर्मूला लगेगा AIS. ये मेरा है कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला लगता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मूला. बट आई विल एक्सप्लेन टू यू. बट हमारा वॉस क्या बनेगा? जेते, क्यू एते. We have EAQ over here, right? Il, el, ete.
nous étions, Nous nous étions, Nous étions. vous étiez, Nous étions. elles étaient, elles, c'est clair, Arvi. Clair. So now speak up. I was is what? J'étais, J'étais. tu étais, You elles étaient. It is just you have to learn the ending of AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, and AIENT. Clair. Speak up. J'étais, tu étais, elles étaient, nous étions, Nous étions. vous étiez, Vous étiez. elles étaient. C'est clair, Clair. clair. C'est clair. The market was closed. Now, Anupji, what you will say the market was closed? What you will say? Tell me. The market was closed. What you will tell? Now, Dimple Madam, the market was closed, but the market was closed. What you will say? But मैं speak up. मैं le marché, the market. Are we le? Because masculine है. Le marché we have EIQ. Was closed. Market क्या है? Noun है. So noun will always conjugate with il and l. Il he she से conjugate होगा ना noun. क्या आ जाएगा? एटे ETAIT. आगे समझ आ रहा है? में la marche était fermée. Fermé. Fermé we have closed. FERMEAQ. Mais la marché était fermé. C'est clair. Now देखते हैं après moi. I'm saying one day. Un jour. Speak up please. देखते हैं après moi. Un jour. Un jour. क्या हुआ? Un jour. Speak up please. Un jour. Tell me please. जब आले वो मार्शे में द मार्शे एते पर Mais le marché était fermé. Now speak up, Arvi. Speak up, please. Speak up, Arvi. Un jour, Un jour. je vais aller au marché, Je vais aller au marché. mais Mais le marché était fermé. le marché. Is it clear to you? Now turn the next English. What is the next English? Oh my God, what is happening over here? Oh my God. Ooh la la. Oh mon Dieu. Ooh la la तो ऐसे ही है. बोलो. Oh mon Dieu. Okay. Oh my God. If you're saying, oh my goodness, oh my God. Okay, tell me the English. Oh my God. What is happening over here? Oh my God. Oh, oh mon Dieu. Speak up. Oh mon Dieu. Okay, let me pen and down. Speak up. Oh mon Dieu. What is happening over here? What is qu'est-ce qu'il arrive? Speak up. Qu'est-ce qu'il arrive? Speak up. Qu'est-ce qu'il arrive? What is happening over here? Speak up. Qu'est-ce qu'il What is happening over here? आप बोलोगे qu'est-ce qu'il arrive? या फिर आप एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस यूज करते हो que se passe till ici. Que se passe till ici. Speak up. qu'est-ce qu'il arrive मैंने बहुत बार कर लिया. Speak up. Que se passe till ici. Que se passe. Oh mon Dieu, que se passe till ici is here. एक मेरा फ्रेज है que se passe till ici. Speak up. Que se passe till ici. Qu'est-ce qu'il arrive? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il arrive? Que se passe till ici? Que se passe till ici? C'est clair? Till ici. Qu'est-ce qu'il arrive? Que se passe till ici? Oh mon Dieu. Que se passe till ici? Basically,
Cause past daily. What is happening over here? Qu'est-ce qu'il arrive? Speak up. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il arrive? Speak up. Qu'est-ce qu'il arrive? बोलो qu'est-ce que c'est? बोलो qu'est-ce que c'est? Speak up. Qu'est-ce que c'est? बोलो qu'est-ce que c'est? What is this? बोलो qu'est-ce que c'est? Speak up. इसको practice करना है क्योंकि the moment you will do practice ये lyrics इतना और क्या है ये? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il arrive? Oh mon Dieu, que se passe-t-il ici? Speak up. Que se passe-t-il ici? What is happening over here? Mais la marche était fermée un jour. J'avais allé au marché, mais la marche était fermée. Oh mon Dieu, que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'il arrive? Speak up, please. Bolo. C'est clair. Now tell me the next English. People are very foolish. Yes. People are fool. We have a foolish is fool. People are very foolish. So what do you say? Les gens, speak up. Les gens sont sont. Why S-O-N-D are we? क्योंकि एथर का प्लूरल क्या है? sont. हम je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont pluriel. Les gens sont très idiots या फिर les gens sont fous. Who is your foolish, mad, fou. Les gens sont fous. Fou is your crazy. Oh mon Dieu, les gens sont fous. Is it clear to you? Is it clear to you? Les gens sont fous. Is it clear to you? Qu'est-ce que c'est? C'est clair? Now, tell me the next English. I want to get rid of this problem. Yes, what is to get rid? I want to, we are done débrasser verb. I want to get rid of this problem. So, je veux me débrasser de ce problème. Je veux, I want, are we, vouloir verb. Je veux me débrasser de ce problème. Je veux me débrasser. We have a verb, débrasser is to get rid of. Débrasser. Je veux me débrasser de ce problème. ये practice करना है. Now next English is what? People come to the market and buy a lot of products. People come to the market. Okay. Now बनाओ इसकी आप डिम्पल madam. People come to the market. And buy. Lot of products. Okay. Now tell me Dimple madam. Les gens viennent. C'est la. Les gens viennent au marché et achètent because les gens achètent ent et achètent beaucoup de produits. Now the produit now are we? Paneer is my verb to come. Paneer is my verb to come. Paneer is my verb to come. So the moment I want to conjugate paneer verb, that is je viens. Speak up, please. Je viens. Speak up. Tu viens. Elle vient. Nous venons. Vous venez. Elles viennent. C'est clair. Pick up. Je viens, tu viens, il, elle vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. C'est clair. Clair. And we have verb achete. A-C-H-E-T-E-R. Speak up. Achete. Speak up. Are we? Achete. Speak up, please. Achete is my verb to buy. Speak up. Achete. Speak up, please. Achete. Yes. The moment I want to convert achete verb, right? अभी ध्यान से समझना है, बिल्कुल सेंस है ये कि अब मैं कॉन्जुगेट करूंगा तो मेरा जो ई है वो ग्राफ में एम कन्वर्ट हो जाएगा. जाशेद. स्पीक अप. जाशेद.
Tu achètes. Okay. Il, elle achète. Nous achetons. Vous achetez. Il achète. Now, ils achètent. Now, speak up. देखो मेरी verb है acheter is to buy. The moment I want to convert acheter verb with e grave हो जाएगा ये. E के ऊपर एक accent आ जाएगा which is तो s अब मैं sound. लिंक में फर्क हो गया. Conjugation में होगा not in case of nu and vous. Not in case of nu and vous. Speak up. J'achète. Tu achètes. Il, elle achète. Nous achetons. Vous achetez. Il, elles achètent. Now tell me the next English. What is the English? A small cartoon. नहीं 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 इसी का भी I want you. Sorry, where is that gone? Les gens viennent. Are we? Les gens viennent. Why viennent? Because vanille का future क्या है? Viennent. देखो future क्या है? Sorry. Plurial क्या है? Viennent. V-I-E-N-N-E-N-T. Say clear. तो now मैं क्या कह रहा हूँ? Les gens viennent au marché. The people come to the market. बहुत सारे हैं वनीर कॉन्जुगेशन. देखो ऊपर हमने करा ना अभी वनीर. ये वनीर ना वनीर. Je viens, speak up. Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent. So les gens viennent au marché et t'achètent beaucoup de produits. C'est clair? Lot of products. C'est clair? Now tell me next English. Small cartoon I have seen. Small cartoon I have seen. Okay, so cartoon we called as dessin anime. क्योंकि एनिमेशन होती है ना. dessin is your design. dessin drawing. dessin speak up. dessin petit dessin anime का j'ai vu. Now what is j'ai vu? Now are we very good to understand? We have var verb is to see. Var is my verb to speak up. Je vois, tu vois. C'est clair, ये present tense है आदमी. Il, elle voit. Nous voyons. Yes. ये आपका है present tense चल रहा है आपका. Now you will come to know. Je vois, tu vois. आपको हो रही है practice. Il, elle voit. Nous voyons. Vous voyez. Conjugation बहुत ध्यान रखना. And il, elle voit. V-O-I-E-N-T. Voix. V-O-I-E-N-T. Il, elle voit. C'est clair. लेकिन what would be I saw? ये तो I see था. अभी ध्यान से समझना. मैंने आपको बताया था either I will take our verb, either I will take adverb help in case of past indefinite tense. बताया था आपको मैंने. कहता ना हमने. The moment I want to convert my past indefinite tense, I have to take our or adverb. I have to take the help of our and क्या चलता है मेरा. our का present tense एक ऑप्शन नहीं. our का प्लस जो आपकी वर्ब है देखने की उसका पास्ट पार्टिसिपल. वार का पास्ट पार्टिसिपल है व्यू. हम करते हैं टॉक गो वेंट गॉन. तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है. वेंट एंड गॉन. ऐसी वार का खाली इसमें एक ही पास्ट पार्टिसिपल होता है व्यू. इसमें डबल नहीं होते थे गो वेंट गॉन. नहीं, इसमें एक ही होगा व्यू. वार सी सो सीन होता है. तो व्यू इज योर सो आल्सो. व्यू इज योर सीन आल्सो. व्यू. सो वार का पेपे बोलूंगा. पेपे क्या होता है. पास्ट पार्टिसिपल. पार्टिसिपल से क्लियर. पेपे क्या है वार का. व्यू. So if I will say I saw, so it means you will apply our present tense first. What is our present tense? J'ai vu. You saw. What is it? You are view. He saw. What is this? Elle are view. Take that. Nous allons. Sorry, nous avons view. C'est clair. Vous avez view. C'est clair. And elles ont view.
Now speak up. J'ai vu, tu as vu, il elle a vu, nous avons vu, vous avez, and elles ont vu. C'est clair? Are we? So in case of past indefinite, we have to take the help of our plus pp of the verb. So if I'm saying a, a small cartoon I saw, so pati dessin animé, small pati, small is pati, pati dessin animé que j'ai vu, I saw. Cartoon is dessin animé. Dessin animé, c'est clair? Anime, c'est clair? C'est clair? Because dessin we have a drawing anime animation. Animation, drawing animation. Clear? Now tell me the next English. But the cartoon was very naughty. But the cartoon was very naughty. Now naughty we have méchant. Speak up, méchant. अब मैं क्या बोलूंगा अब now tell me. मैं le dessin animé était was ETAITRV était très méchant, very naughty, très méchant. Mais le dessin animé était très méchant. C'est clair? Now tell me next English. Cartoon was playing with the boys and the girls. Yes, cartoon was playing with the boys and girls. Now, I will explain to you. Now, Arvi, we have verb jouer. Jouer is my verb to play. Jouer, speak up, jouer. Jouer is my verb to play. अब as I explain to you, e-earning verb है. अब e-earning verb का तो आप कर लोगे. You have to. अगर what is the formula of e-earning verb in present tense? E-S-E. What is the formula? Tell me. E-S-E-O-N-S-E-Z-E-N-G. You can do this. You have to eliminate ER and you will convert this. But I'm saying the cartoon was playing. We have past continuous tense. We have past. What is the formula of past continuous tense? So you have to repeat after me. A-I-S. A-I-S. A-I-T. Declare. I-O-N-S. I-E-Z. And A-I-E-N-T. Say clear. Now, in order to make past continuous tense, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ये चीज. In order to make, आज भी ध्यान से समझना. In order to make past continuous tense. Now, tell me, Anupji, what is the formula of past continuous tense? We have to convert nous present tense. Nous jouons. राइट है ना आपको? In order to make past continuous tense in French language, I have to take the help of nous jouons. So nous तो मैं हटा दूंगा. It is there. I will do jouons. jouons मैं लूंगा. I have to take jouons और मैं यहाँ से ons रिमूव कर दूंगा. jouons लेके ons और फॉर्मूला लगा दो AIS. लग गया AIS का फॉर्मूला. तो je jouais, I was playing. Say clair. Are we? Is it clear to you? Jouer AIS. Are is it clear to you? Elle jouait Jouait. Nous jouions IONS. Say clair. समझ आ रहा है आदमी? ये पास कंटिन्यूस में लाएंगे आप. कंटिन्यूस में बनाना हो तो फॉर्मूला इज AIS AIT IONS IEZ and AIEN. This is formula of past continuous tense. I was playing. एक आवर भी आवर बताया अभी एक्चुअली बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं कि जैसे मैं बताऊं कि मैं जाता था थे थी में बना रहे हैं. दैट इज योर पास्ट इंडेफिनिट.
आवर का हाँ प्रेजो प्लस पेपे से क्लियर आदमी तो नो जुइयो वो जुइए एंड इल एल जे ओ यू ए आई ई एन टी का फॉर्मूला है जुए इज इट क्लियर टू जुए अब वो क्या कह रहा है टेन द इंग्लिश मेल एट दिस कहाँ पे गया इंग्लिश व्हाट इज द इंग्लिश द कार्टून वाज प्लेइंग with the boys and girls are we लर्देजे anime juin J-A-O-U-A-I-T-Y because we have il n conjugation देखो ये वाला conjugation लगा है juin juए sorry it's not plural the single cartoon is juए so what I will say लर्देजे anime jouer avec les garçons boy et les filles girls A is my aunt. So le dessin animé joué avec les garçons et les filles. The recording भी है session. I will send it to you. आदमी practice करनी है. Clear? 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 Now turn to next English. Anup ji. He always did bad things. He always did Bad things. bad things. Okay. But while playing the cricket, But while playing the cricket, he also he but while playing the cricket, uh, he also used to. he also used to He okay. also used a lot of things. He also used a lot of things. Now tell me, Madame Dimple. The English. He always did bad things. He always did. Now. मैं बताता हूँ आपको कोई बात नहीं. He always did. Now are we? Very good. Very good. He always did. Tanvi. Now fair is my verb to do. Very good. Fair is my verb to do. Clear? Now are we? Tell me the present tense of fair verb. Speak up. Your way now. Madame Dimple, tell me the present tense of fair verb. Fatafat. Je fais, tu fais, il fait, Il, elle Faisons. fait, nous, nous faisons, nous faisons, vous faites, vous faites, and this form, and one Vous faites. form, F1. il, elle font. इसका पूरा practice करना है. Il, elle font. So je fais, tu fais, il, elle fait, nous faisons, vous faites, il, elle font. C'est clair. Now are we? What is a pepe? If I will say I did. I did. So fair is my our verb conjugation. Fair is my what you will do? Our present plus pepe of the fe. Pepe of the fe is F-A-I-T. Clear? Now speak up. Jaffe, is it clear to you, RV? Tell me yes or no. Jaffe, tu as fait, il, elle a fait, c'est clair. Nous avons fait, c'est clair, RV. Vous avez fait, c'est clair, RV. Now tell me, Madame Dimple, the fair verb, past continuous tense. Okay. No. Now, yes, very good, very good. So are we? Past continuous में क्या करता हूँ? I have to take the help of new conjugation of present. Nu का present. Nu का present क्या है बताओ? देखो ना, nu faisons है. In order to make, I'm telling you again and again, in order to make past continuous tense, I have to take the help of nu present tense. क्या है? Nu faisons. तो उतार दो nu faisons. Is it clear? Yes. Yes. Fine. Right? Okay. Is it clear?
C'est clair? Yes. Okay, now you tell me. Sorry, I forgot. I would say are we? Then the formula of past continuous tense. AIS, AIS. AIT, AIT, IONS, IEZ, and AIENT. Now I have to eliminate ONS, I have to eliminate. So je faisais, I was doing. Tu faisais, il faisait, कर लोगे आप. Nous fassions. FAS तो लगेगा ना? Single S. Nous fassions. Vous fassiez, il faisait. Is it clear to you? Nous faisions. FAS. C'est clair? C'est clair. Speaker, je faisais, tu faisais, il faisait. Speaker, please. Je faisais, tu faisais, il faisait. Nous faisions, vous faisiez, il faisait. C'est clair. C'est clair, Arvi. Now, Pronunciation last वाले का LL faisant. 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 C'est clair. Now, if I will say, what is the English? He always did. अब बनाओगे आरवी आप. He always did. Either I will say, okay. He always did. You will say, il a fait या il faisait. कुछ भी मैं अपना सेंस लगा रहा हूँ कि he was doing something else. I can say, he always did. Il a fait toujours. Il a fait toujours the movies shows. Movies, bad. Movies. Movies is your bad. The movies shows mais. But en jouant au cricket, in while playing the cricket, en jouant. En jouant. This is something like your gerundive. En jouant while playing something. En jouant. While playing cricket, we have en jouant. ANT लगेगा because are we playing ing. देखो ये वाला playing जो है कुछ भी ये वो playing है कि simple form लगा है ing. The simple form of ing जो is my verb are we. So I was playing is something else. That's a verb. But अगर while playing something, so that er is converted into ant. ing format है ये. क्लियर आदमी. ये बहुत ही ओवरव्यू है ग्रामर का आपका जो आपको मैं दे रहा हूँ. while playing on show. अभी आप देखो एकदम बोलता हूँ कि I was doing something else. वो तो एक आपका आपको पता है कि this is a past continuous. मुझे AIS और मुझे do का पहले conjugate करना है, वहां से ONS हटाना है और AIS AIT लगा देना है. आगे क्लियर हो रहा है आपको? तो रिकॉर्डिंग भी है, इसको देखना बार बार. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि in playing blah blah blah, in doing blah blah blah, that is your then your verb ending would be ANT. क्लियर? सब शॉन ए हो जाएगा तो शॉन PANT Chanton PANT लग जाएगा बस. in singing. Chanton. So en jouant au cricket while playing